आज दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। बदल रहे हैं सभी उद्योग और तरक्की कर रहे हैं हमारे शहर। महिंद्रा चाहता है कि हमारे किसान और ग्रामीण भारत का विकास भी उतनी ही तेजी से हो, जिसका समर्थन हमारी सरकार भी करती है। आज बात सिर्फ जमीन पर फसल उगाने की नहीं है, बल्कि खेती-बाड़ी को एक नया आकाश देने की भी है। एक लंबे वक्त से हम खेतों में आपका हाथ बटाते आए हैं। आपके साथ रहकर ही हम आपकी सभी जरूरतों को समझ पाए हैं और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं तकनीक और सेवाओं का एक ऐसा अनूठा संगम, जिसमें है विज्ञान, यंत्र और डिजिटल तंत्र। इन तीनों की शक्ति। विज्ञान देगा संपूर्ण ज्ञान, यानी विशेषज्ञों से सीधी बात करने की सुविधा से लेकर सही उर्वरकों की जानकारी के लिए हम आपकी सेवा में रहेंगे। यंत्र बनाएंगे खेत पर सभी काम लाभदायक और आसान। तो खेतों में नए यंत्र चलाने हो या सूक्ष्मता से कीटनाशक का छिड़काव करना हो, हम आपकी सेवा में रहेंगे और डिजिटल तंत्र देंगे आपको एक नए स्तर की समझदारी। सेंसर से होगी मिट्टी की सही पहचान। सैटेलाइट, ड्रोन और ट्रैक्टर के ऊपर लगे कैमरा देंगे फसल की सही हालत का ज्ञान। बुआई से लेकर कटाई तक की आपकी हर जरूरत के समाधान के लिए हम आपकी सेवा में रहेंगे। महिंद्रा से जुड़ा हर किसान एक चैंपियन है, जिसे विज्ञान, यंत्र और डिजिटल तंत्र का ये अनोखा संगम और भी मजबूत बनाएगा और हर चैंपियन अपने सपनों को साकार कर पाएगा। माटी भरेगी एक नई उड़ान, जब साथ आएंगे महिंद्रा और हमारे किसान। कृषि महिंद्रा की तरफ से मैं निधि आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में लगाए जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं वो गेहूं और धान है। खरीफ की यदि हम बात करते हैं तो धान प्रमुख फसल है और इसकी जो रोपाई है वो जून जुलाई के समय से आरंभ की जाती है। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो अभी देश के अलग अलग हिस्सों में जो धान है वो अलग अलग अवस्थाओं में उपस्थित है। तो जो भी कोई फसल होती है उसके साथ में कीट और बीमारियां, खरपतवार, तरह की बहुत सारी समस्याएं जो है साथ में रहती ही हैं। अभी वर्तमान समय में या आने वाले जो 15 से 30 दिन है उसकी यदि हम बात करते हैं तो यदि आपका धान जो है वो प्रारंभिक अवस्था में है या फिर कल्ले निकल रहे हैं तो इस समय पे बहुत ही संभव है कि आपके खेत में तना छेदक या पत्ती लपेट की समस्या आ सकती है। तो यदि आपकी फसल जो है वो 20 से 25 दिनों की है तो आप अपने खेत में फिप्रोनिल 0.3% या प्रतिशत जो है GR उसका प्रयोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। यदि बाद की अवस्था में जैसे मैंने बताया था कि कल्ले निकलने के समय पे या बाली के समय पे यदि आप कल्ले निकलने के समय पे यदि आपके यहाँ पे कीट आ रहा है तो क्लोरेंट्रोनिलीप्रोल 18.5% जो फॉर्मुलेशन आता है उसका इस्तेमाल आप 150 ml प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। तो ये आपका दोनों मतलब तना छेदक और पत्ता लपेट दोनों को कंट्रोल करने में जो है आपकी सहायता करेगा। बाद के जो अवस्था में है यदि हम 60 से 65 दिन की बात करते हैं तो उस समय पर धान में भूरा फुदका जो होता है वो लगने की संभावना होती है। तो उसके लिए आप डायनाटोफेरॉन एक फॉर्मुलेशन 20% SG फॉर्मुलेशन जो है उसका इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। तो अगर अब हम यदि बात करें जो धान में आने वाली बीमारियां होती हैं या किस किस चीज़ का प्रकोप हो सकता है, तो अगर आपके खेत में शीट ब्लाइट आई है या आ सकती है, क्योंकि जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि जो समस्या या तो अभी आपके खेत में है या आने वाले समय में आ सकती है। तो शीट ब्लाइट बहुत ही कॉमन समस्या है जो कि जनरली देखी जाती है। तो उसके लिए आप हेक्साकोनाजोल 5% EC फॉर्मुलेशन जो है उसका इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके खेत में ब्लास्ट की समस्या है जो कि शुरुआती अवस्था से लेके जो पत्ती से हमें दिखाई देता है और बाद की अवस्थाओं में नेक में, कॉलर में, अलग अलग जगहों पे दिखाई देता है, तो उसके लिए आप आइसोप्रोथ्योलिन 40% EC का प्रयोग जो है वो 750 ml प्रति हेक्टेयर दर के हिसाब से कर सकते हैं। यदि खेत में हमें BLB मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की समस्या दिख रही है या आने वाले समय में अगर आपको इस तरह की कोई समस्या दिखे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.1 ग्राम प्रति लीटर पानी का जो घोल है वो बना के
और आप अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद की अवस्था में जब बाली बन जाती हैं और जो है काफ़ी बड़ी फसल हो जाती है हमारी, तो उस समय पे कभी कभी फॉल्स मट नामक एक बीमारी आती है। तो जहाँ पर इस अवस्था में अभी हमारी जो फसलें हैं, तो जिसे हम हल्दी गार्ड भी बोलते हैं, इस तरह की अगर आपको समस्या दिखाई दे रही है तो प्रोपिकोनाजोल 20% ईसी का जो फॉर्मुलेशन है वो आप 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और जो आपकी खेत में बीमारी आई है उसको अच्छे से हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो अभी तक हमने बात की थी कीटों की और रोगों की। तो फसल में खरपतवार की भी काफ़ी समस्या रहती है। तो जिन जगहों पे अभी भी फसल जो है वो छोटी है या 20 से 25 या 30 दिन की अवस्था में है, तो वहां पर पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड जो है उसमें आप बिस्पायरिबाक सोडियम 10% SC जो आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं और ये आप लगभग 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने पौधों को जो है पोषण का काफ़ी ध्यान रखें और साथ ही पूरी निगरानी बनाए रखें। और अगर कोई भी समस्या दिखे तो अपने अधिकतम जो भी कृषि प्रतिनिधि है या कोई भी केवीके है उसमें आप संपर्क करके जो भी अगर उसका सॉल्यूशन है वो ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आशीष गणपुले, महिंद्रा कृषि सेंटर ऑफ एक्सलेंस एग्रोनॉमी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम कपास की फसल में अगले 10-15 दिनों में जो भी कार्य करने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले 10-12 दिनों से जो बारिश हुए उस बारिश के कारण कपास में जो भी संभावित कीट एवं रोग आने की समस्या आ सकती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कपास में अभी आगे आने वाले दिनों में रस चूसन करने वाले जो कीट है जैसे कि जसीड्स है, व्हाइट फ्लाई है, इसके इंसिडेंस होने की संभावना है। इसके नियंत्रण के लिए आप अपने खेत में जो भी सिफारिशित दवाइयाँ हैं जैसे कि बिप्रोफेजिन है या डाइफेनथुरान है या कोई भी अंतरप्रवाही कीटनाशक जैसे थाइमेथोक्सोम है या इमिडाक्लोप्रिड है, इसमें से किसी भी एक दवा का छिड़काव अपने खेत में इस कीट के इंसिडेंस के अनुसार कर सकते हैं। इसी के साथ अभी पिंक बोलवर्म जो है उसको ये कीट के आने की भी संभावना आपके खेत में है। तो इसके नियंत्रण के लिए अपने खेत में अगर आपकी कपास फ्लावरिंग स्टेज में है तो फ्लावरिंग स्टेज में अगर इनिशियल फ्लावरिंग है तो जो रोजेट फ्लावर जिसको बोलते हैं, मतलब गुलाब की कली जैसी अगर फ्लावर दिख रही है तो ये लक्षण है कि उसमें पिंक बोलवर्म का प्रकोप है। अगर आपने उसमें फेरोमोन ट्रैप्स लगाए हैं तो फेरोमोन ट्रैप्स में अगर 24 घंटे में उसमें 8 एडल्ट आ रहे हैं पिंक बोलवर्म के, तो वहाँ उसका प्रकोप जो है वो आर्थिक स्तर के ऊपर आ गया है। तो इसके लिए आपको दवा का छिड़काव करना जरूरी है। पिंक बोलवर्म के लिए प्रोफेनोफास 2 मिली प्रति लीटर इस मात्रा से अगर आप छिड़काव करेंगे तो इस अवस्था में आप इस कीट का प्रबंधन आपके क्षेत्र में कर सकते हैं। उसी के साथ अभी जिस खेत में बॉल फॉर्मेशन में कपास है, बॉल फॉर्मेशन स्टेज में जिस खेत में कपास है, उस स्टेज में कपास के ऊपर ज़्यादातर जो पत्ते पे धब्बे होते हैं, जो बैक्टीरियल जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट, उसके आने की संभावना होती है। इसके नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो बाजार में एग्रीमाइसिन के नाम से उपलब्ध है उसका 2 ग्राम, उसी के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा है उसका 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करेंगे तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज है, उस डिसीज से आप कपास की फसल को
सुरक्षित रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आने वाले दिनों में आपके खेत में जो रस्ट ट्यूशन करने वाली कीट है या पिंक बोलवर्म है या ये बैक्टीरियल ब्लाइट है, इसका पूरी सावधानी से ध्यान रखें और जो भी अभी दवाइयाँ हमने सिफारिश की है उसका उपयोग करें, ताकि आपके खेत में इस कीट एवं रोग से कम नुकसान हो। धन्यवाद। નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા કંપની તરફથી ખેડૂત મિત્રોને ખેતીમાં કેવી રીતના વધારે ઉત્પાદન મેળવી શકાય, જે કંઈ બી ખેતી કરે છે તે ખેતીને વધારે સવલતવાળી આસાનીથી કેવી રીતના કરી શકાય તે માટે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા કંપની વતી ક્રિસ એક વિભાગનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવે છે, જેની અંદર ખેડૂતોને એગ્રી એડવાઇઝરી, મેકેનાઇઝેશન અને ડિજિટલ ટેકનોલોજી દ્વારા ખેતીને કેટલી સરળ બનાવી શકાય અને વધારે ઉત્પાદન મેળવી શકાય અને જે નજીવા ખર્ચા આપણા થતા હોય તેને કેવી રીતના ઓછા કરી શકાય તેના માટે કામ કરે છે. હવે એમાં પહેલું આપણે જોઈએ તો એગ્રી એડવાઇઝરી. તો એગ્રી એડવાઇઝરીમાં કઈ વસ્તુઓ કંપની તરફથી તમને સલાહકાર તરીકે મળી શકે છે. જેવી રીતના આપણે ગુજરાતમાં જે મુખ્ય પાકો છે, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર એરિયામાં જે કપાસ, મગફળી અને ઘઉં, તો કપાસ અને ઘઉંમાં વધારે પડતા ફોકસથી કંપની કામ કરે છે. તો એ પાકમાં જમીન તૈયારીથી લઈ અને વાવણી સાથે જમીન ચકાસણી, કેવા ખાતરો વાપરવા, કયા ઇન્ટરકલ્ચર ઓપરેશન આપણે વચ્ચે કરવા અને કેવી રીતના હાર્વેસ્ટિંગ કરવું અને બજારમાં કયા ભાવે કેવી રીતના વેચવું, એના માટે તમામ સુવિધાઓ કંપની તરફથી પૂરી પાડવામાં આવે છે. જેવી રીતના કે સાધનોનો ઉપયોગ કરી ખેતીને વધારે સરળથી જમીન તૈયારી કરી શકાય, સોઇલ ટેસ્ટિંગ કે જમીન ચકાસણી કરી હોય તો કયા ખાતરો આપણા જમીનમાં આવેલા છે અને કયા ખાતરોની જરૂર છે, જેથી કરીને વધારે પડતા ખાતરનો દુરુપયોગ ન થાય અને જમીનનો જે બગાડ થયો છે તે બગાડ થતો અટકી જાય અને એના કારણે જે આપણા બોરવેલ કે જે કૂવાના પાણીમાં જે બગાડ આવ્યો છે કેમિકલોથી, તેનો પણ આપણે સરળતાથી આગળ વધી અને એનો રસ્તો કાઢી શકીએ. આ ઉપરાંત ડિજિટલ ટેકનોલોજી, એટલે કે તમે જે અત્યારે કંપનીમાં જે ઇન્ટરનેટ દ્વારા વોટ્સઅપ કે જે કંઈ બી એપ્લિકેશન વાપરો છો, તો એની સાથે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા વતી ક્રિસ કરીને એક એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે, જેની મદદથી વેધર એટલે કે વાતાવરણને આધારિત તમારા લોકલ એરિયામાં કઈ વેરાયટી કેવી રીતના વાવી શકાય, કઈ દવાનો છંટકાવ કરી શકાય, જેથી કરીને વધારે પડતી દવાનો આપણે જો ઉપયોગ કરતા હોય તો એનો મદઅંશે દુરુપયોગ થતો અટકી જઈ શકે. આ ઉપરાંત આપણે જે લેબરનો આપણા વિસ્તારમાં ઘણો બધો પ્રોબ્લેમ રહે છે કે મજૂરો મળતા નથી, વધારે ખર્ચો થાય છે, સમયે આપણી ખેતી થઈ શકતી નથી. તો એ બધા પરિબળોને આધારે રાખી મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા કંપની રેન્ટિંગ એટલે કે ભાડાના પટ્ટા ઉપર તમે કેવી રીતના સાધનો મેળવી શકો ડીલર પાસેથી અથવા જે રેન્ટલ એન્ટરપ્રેન્યોર હોય એની પાસેથી, તો એમાં કેવી રીતના તમે મેળવી શકો. તો જેવી રીતના તમે તમારા ફોનથી કોલ સેન્ટરમાં ફોન કરી તમે સાધનો બુક કરાવી શકો છો, અથવા કે તમે એક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી તેમાં તમારા સાધનો તમે બુક કરાવી શકો છો કે આ નહીં આ દિવસે અમારે 3 થી 4 વાગે કે આ સમયે અમારે આ સાધનની જરૂર પડે છે. તો ચોકસાઈપૂર્વકની ખેતી તમે તમારા ખેતરમાં ઘેર બેઠા કરી શકો છો. અને એવા સાધનો ઘણા હોય જે તમે ખરીદી ન શકતા હોય અથવા વધારે મોંઘા હોય, તો એવા સાધનોનો ઉપયોગ પણ તમે તમારી ખેતીમાં કરી શકો છો, જેવા કે લેઝર લેવલર, જમીનની લેવલિંગ કરવા માટે વધારે સરળતાથી અને ટેકનોલોજીથી કરી શકો છો. પછી વાવણી માટે, ચોકસાઈપૂર્વકની ખેતી માટે કે જે આપણે બિયારણ છે તેને યોગ્ય ઊંડાઈએ ક્યાં સુધી વાવી શકાય, યોગ્ય ઊંડાઈએ અને યોગ્ય બિયારણ દર કેવી રીતના વાપરી શકાય તે માટે ન્યુમેટિક પ્લાન્ટર આવે છે, જેનો ઉપયોગ કરી તમે બિયારણનો વધારે ખર્ચો જે છે થતો હોય એ બચાવી શકો છો, ખાસ કરીને મગફળી, ચણા એવા પાકોમાં, કપાસ એવા પાકોમાં, તો એક ખર્ચો બચાવી શકાય છે. બીજી વસ્તુ કે એવા હાર્વેસ્ટિંગના સાધનો, જે આપણે ઘઉંમાં ઘણીવાર તકલીફ થતી હોય, હાર્વેસ્ટર ટાઈમે મળતા ન હોય, આપણે કુંવરની ક્યારેક જરૂર હોય, તો તમે રીપર બાઇન્ડરનો ઉપયોગ કરી ભાડે મેળવી અને એના કાપણી કરી પૂળા વારી અને એનો તમે થ્રેસિંગ દ્વારા ઉપયોગ કરી શકો. તો મજૂરની બદલે ટેકનોલોજીવાળા સાધનો જે ઊંચી કિંમતના હોય અને આપણે પરવડી શકે એવા ન હોય, તેનો તમે કેવી રીતના ઉપયોગ કરી અને ખેતીને વધારે સરળ બનાવી શકો. આ માટે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા કંપની ક્રિસ દ્વારા બધી સર્વિસો પ્રોવાઈડ કરે છે, પૂરી પાડે છે. તો એના માટે અમારા હાલ સૌરાષ્ટ્ર એરિયામાં જામનગર, અમરેલી અને જૂનાગઢ, જે જામનગરમાં મુરલીધર ટ્રેક્ટર દ્વારા, અમરેલીમાં અમર ટ્રેક્ટર દ્વારા અને જૂનાગઢમાં અવધ ટ્રેક્ટર દ્વારા આ બધી સર્વિસો પૂરી પાડવામાં આવે છે. તો આ સર્વિસનો વધારે ઉપયોગ કરી આ સેન્ટરનો વધારે મુલાકાત લઈ જાણકારી મેળવી અને ખેતીને કેવી રીતના સમૃદ્ધ બનાવી શકાય, પાકોનું યોગ્ય જાળવણી કરી વધારે ઉત્પાદન કેવી રીતના લઈ શકાય, તે માટે ખાસ કરી વધારે મુલાકાત લઈ વધારે જાણકારી મેળવી ખેતીને સમૃદ્ધ કરી, એ જ અભ્યર્થના.
ખેતરમાં 2 વીઘા કરેલા છે. એકમાં સટકોર કરેલો છે, બીજો અને બીજામાં અમારી રીતે અમે છાંટ્યું છે. એમાં બહુ શક્યતા નથી. જે એના જ કીધા પ્રમાણે છાંટી છે એમાં બહુ સારામાં સારું છે. અને અમારામાં ફળફૂલ નથી અત્યારે, એમાં ઝાઝુ છે. વરસાદ વરસ્યો છે પણ એમાં ફળફૂલ કર્યા નથી. અને ચારામાં સારું છે એ 40 સાઈડમાં. અને અમારે 15-17 વીઘામાં કાંઈ ઓછું છે. ફળફૂલ હતા પણ ખરી ગયા છે હાવ. અને આમાં અમારે ખર્યા નથી. એટલો ફાયદો છે અમારે એમાં. તો એ દવા સાથે અમારે ફાયદો છે. લાવો. મારા ખેતરમાં 18 સાવમાં ડેમો કરેલો છે. જે આ દવાથી ડેમો કરાવ્યો છે એમાં ફૂલફાલ વધારે છે. અને જે મારી રીતે સાચી છે દવા એમાં ઓછો છે ને આ વરસાદના કારણે એમાં ખીરો છે. આ ડેમો કરેલ છે એમાં ખીરો નથી. એમાં સારામાં સારું છે અને ઓમાં બહુ ઓછું છે.